Good morning, students. Today I will be starting a new chapter on Euglena viridis. We have so far studied about many animals or many organisms which belong to phylum Protozoa. Euglena is also one of the organism, a unicellular organism which belong to phylum Protozoa. Now here you can see the classification of protozoa. We know phylum Protozoa is divided into four subphylum: Sarcomastigophora, Sporozoa, Nidophora, and Coeliophora. Of subphylum Coeliophora, we have studied organism Paramecium, which belongs to class Ciliata. Today we will be discussing about Euglena. Euglena belongs to subphylum Sarcomastigophora. Sarcomastigophora has a superclass called Mastigophora, and this Mastigophora is having one class called Phytomastigophora. So, Euglena belongs to phylum Protozoa, subphylum Sarcomastigophora, superclass Mastigophora, class Phytomastigophora. Here the word phyto is important to consider because phyto implies for plants. Why Euglena is kept in a class called Phytomastigophora? Because Euglena is a unique organism and it is considered to be a connecting link between plants and animals. Now we know that plants have specific characteristics. What are those characteristics? Plants can synthesize their own food. They have special pigment called chlorophylls which can convert carbon dioxide and water in presence of sunlight into organic food. So Euglena is said to be a connecting link. Animals cannot synthesize their own food. They depend on other sources for their nutrition. Plants can not move from one place to another, but animals can move from one place to another. Plants have cell wall surrounding their cell membrane, whereas animals' cell do not have any cell wall. The cell wall is generally made up of cellulose in case of plants, while they are absent in case of animal cell. So, why Euglena is known to be a connecting link between plant and animal? Because Euglena contains chloroplast, which in presence of sunlight is capable of converting inorganic carbon dioxide and water into organic food. Euglena can move about like animals. And third important characteristic that Euglena has is that Euglena does not have a cell wall around itself. The plasma membrane is not covered by a cell wall. Therefore, Euglena has few characteristics that are of plant kingdom and few characteristics that are of animal kingdom. One of the unique feature of Euglena is that if it is devoid of sunlight,
and is kept in dark for some time. Then Euglena's chlorophyll or chloroplast also absolve, that is disappear, and now for their nutrition they behave like other protozoans. They consume their nutrition by ingesting other small microscopic organisms. So these are certain characteristics which we must understand, that why Euglena is known to be a connecting link between plant and animal. Euglena phylum Protozoa सब phylum Sarcomastigophora को बिलोंग करता है। इसकी सुपर क्लास है मैस्टिगोफोरा और क्लास फाइटोमैस्टिगोफोरा। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, और यूग्लीना को इस क्लास में रखने के पीछे जो रीज़न है वह यह है कि यूग्लीना में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ लक्षण प्लांट्स के होते हैं यानी पादपों के होते हैं, और कुछ लक्षण जंतुओं के होते हैं। जैसे प्लांट्स अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है जिसकी वजह से वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की उपस्थिति में भोजन में परिवर्तित कर सकते हैं। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, और प्लांट के कोशिका के अराउंड सेल वॉल उपस्थित होती है। एनिमल्स अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वह अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं और अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। और प्लांट्स की तरह एनिमल के सेल के चारों तरफ सेल वॉल उपस्थित नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल अराउंड द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन एनिमल। तो ये कुछ प्लांट और एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक है, और यूग्लीना में ये कैरेक्टर्स, इन दोनों के कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूग्लीना अपना भोजन स्वयं बना सकता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होती है जिसके वजह से सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह अपना भोजन बना सकता है। तो यह जो फीचर है यह प्लांट का या पादपों का फीचर होता है। यूग्लीना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। यूग्लीना की सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल अनुपस्थित होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते जुलते हैं, इसी कारण से यूग्लीना को पादपों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी समझी जाती है।